वाले केसेस हम नहीं बात कर रहे हैं, हम वो वाले बात कर रहे हैं जिनको छोड़ा नहीं है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं। जी जी, ये तो मिसिंग में नहीं रहे ना, ये उसमें आ गए, दस्तयाब हो गए, खुद आ गए, दस्तयाब हो गए, जो बात है वो एक अलग इशू है। हमारा जो jurisdiction है वो habeas corpus की jurisdiction है। When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ठीक है, habeas corpus की jurisdiction limited होती है, produce the person. ठीक है, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. तो अब हमें बताएं, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ आपको पता है या नहीं पता है? जी सर, हो रही हैं इस तरह से। नाम है कि लोगों के वो किधर हैं? माय लॉर्ड, क्योंकि लोग जनरली बात करते हैं, जब हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई नाम बताओ, तो नेचुरली पूछेंगे तो जवाब देंगे ना। अगर हम एक जनरल बात कहेंगे, वो क्या जवाब देंगे हमें? लॉर्ड, इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये कोर्ट, क्योंकि हमारी इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता रही हैं और तकरीबन 18 में से 15 साल मैं यहीं पर पेश होती रही हूँ। और इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए अब हर चीज़ें दौर बदलते जाते हैं ना। कुछ लोग मिसिंग पर्सन आज भी, मगर वो उठाए गए हैं, आपने कहा 2005 में या 2002 में, ठीक है, तो वो यकीनन इस हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं ठहरेगी ना। तो फिर भी अगर आज ये गलत काम कर रहे हैं तो हम उनको रोक सकते हैं। दो बातें हो गई, देखिए इसको जरा सा क्लैरिफाई कर लें। हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमें टाइम नाम दे दें और पीरियड्स दे दें ना, तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो हो गए पुराने मिसिंग पर्सन्स, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि उनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं जी। एक दूसरा है कि ये चीज को रोका जाए, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। एक है उनको दस्तयाब करवाया जाए, वो अलग हम जरा उसको करना चाहते हैं, लॉजिकली चलना चाह रहे हैं। तो हम कम से कम पुराना तो नहीं मसला हल कर सकें शायद, अगर आज वाला तो हम कर सकते हैं ना, रुकवा तो देना सारी बातों को, मिसिंग पर्सन को रुकवा दें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहती हूँ कि आप जब इसकी कॉग्निजेंस लेंगे तो इसकी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन होगी कि क्या ये स्टेट तो की पॉलिसी आज ही हम इनको हुक्म देते हैं कि भाई पॉलिसी रोक दी जाए, कि लोगों को उठाना कम से कम लिस्ट स्टॉप हो जाए, तो फिर हमारे पास सिर्फ पिछले ही रह जाएंगे जिनको रिकवर करना होगा। Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with law. If you give the statement today, and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. My lord, this is a statement of law, and no, but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf. Naturally, he may be retired tomorrow or transferred tomorrow, so we can't hold him responsible. But it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. अब भी आपने अखबार में पढ़ा, कल या आज के अखबार में था,
कि 6 नाई को मार दिया वजीरिस्तान में। जी 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 जी। देखिए ये जहनियत, जो लोग कत्ल करते हैं उनको कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज का। तो इस दुनिया में तो चलें वो शायद कानून की गिरफ्त में ना आए, मगर आखिरत में क्या करेंगे? मतलब आखिरत में क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तो देखिए ये स्टेट को भी ये जो माइंडसेट है उसको चेंज करना होगा। ये कोई कोर्ट एक फैसले करके कुछ नहीं कर सकती है। That's right. जब तक ये पूरा मशीनरी इस माइंडसेट को चेंज ना करे। और जी ये पता नहीं क्या करने आ रहे हैं। अब आपने बलूचिस्तान में भी लोगों को कत्ल किया जा रहा है एथनिसिटी ग्राउंड पे। देखिए ये कोई सलूशन आज तक किसी ने कोई कत्ल और गारत से कुछ पाया नहीं है। तो भाई कोई जेन्युइन आपकी बात है, आप आइए पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन करवाइए। जब इलेक्शन हुए थे लास्ट वाले में था चीफ जस्टिस बलूचिस्तान में, बड़ी मुश्किल से हमने सारे इलेक्शन कराए और कुछ एलिमेंट्स नहीं चाहते थे इलेक्शन हो, because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. ये एक अखबार की सुर्खी लगी, ऑर्डर पास हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। I think the state needs to be definite statement should be given by you in writing by the government. ये कमीशन जो था मिसिंग पर्संस का, ये वजूद में है या नहीं है? है सर, है। कौन हेड कर रहा है? It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011. 11. So he should be now what, 77, 78, 77. आप आए हुए वहाँ से, कमीशन से आए हैं? रजिस्ट्रार हैं आप कमीशन? आप सामने आइए। ये कितने लोग हैं इस कमीशन के मेंबरान? सर यहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं और साहब शरीफ विर्क साहब रिटायर्ड, शरीफ विर्क साहब, मोहम्मद शरीफ विर्क, मोहम्मद शरीफ विर्क। ये कौन है? ये रिटायर्ड आईजी है जी। और कोयटा में है हमारे जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई जी। ये वॉलंटरी है या इनको तनख्वाह मिलती है? सर तनख्वाह मिलती है सर, तनख्वाह मिलती है सर। सेक्रेटेरिएट है पूरा। कितना आपका बजट कितना है? सर मैं अंदाजा नहीं उधर से बताओ सेक्रेटरी को ही, मुझे पता नहीं। मेरा ख्याल 4-5 करोड़ का होगा। तो आप करते क्या हैं? रजिस्ट्रार हूँ सर मैं कमीशन का। नहीं तो ये बस ये सर तनख्वाहें लेने के लिए कमीशन है या कोई और काम भी कर रहा है? नहीं काम करता है सर कमीशन वाला, पता है ना। कराची में हमारे जस्टिस आपकी एनुअल रिपोर्ट आप जारी करते हैं, मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली भी करते हैं। कितनी रिकवरी कराई है आपने आज तक? तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी। तो हमने बलूचिस्तान में रिकवर की, वो भी आप अपने पास डाल देते हैं कि हमने रिकवर किया। फिर नहीं, कितनी रिकवरी मंथली, क्या है रेशियो आपका रिकवरी का? मैं अभी आप पर्सन्स का ये बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट जनाब को देता हूँ। लेटेस्ट नहीं, वैसे ही बता दीजिए ना, महीने में कितने रिकवर करा, कितनी दफा मीटिंग है? बता देता हूँ। नहीं बात सुने, आपकी मीटिंग महीने में कितनी दफा? डेली होती है सर। क्या डेली होती है? डेली होती है, उसमें लोग आते हैं, मुतासिरीन के घर वाले, सारे सब डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो रिकवरी कितनी होती है महीने में, क्या एवरेज है? यही मैं अर्ज करने लगा हूँ सर। इस महीने में हमारे 46 जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हुए, ये रिकवर हुए हैं हमारे यहाँ। और 46 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, रिकवर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी के दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं सर। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप? सर ट्रेस्ड कह लें, ट्रेस्ड। आपकी रिपोर्ट किधर है? ये है ना, ये कागज का टुकड़ा है, दिखाइए क्या चीज है। 91 देखते तो सारा उसमें दिया हुआ जो इनके मुताबिक देखते हैं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, किसी का नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बाकी ये लिखा है कि आप आज कितने मिसिंग पर्सन्स हैं आपके रिकॉर्ड में? ये लिखी हुई फिगर टॉप पे ना, बता दीजिए ना।
ये जो टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू दिसंबर 2022 7001, डिस्पोज ऑफ से क्या मुराद है भाई? या रिकवर हुए या नहीं हुए? सर मैं मुख्तलिफ किस्म आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए ना। देखें, जब रिकवर होते हैं, बहुत से वो रिकवर होते हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस होते हैं, वो बता देते हैं फलाने केस में कस्टडी में है। असल में सर ये 4 तो ये है शायद, ये उसका मतलब ये है। इसमें नहीं है ना जो अब आजकल मिसिंग पर्सन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो वो तो हमें नहीं पता, हमारे पास जो केस आता है उसका पता होता है हमें। आपसे यही तो पूछ रहे हैं, आपके पास आजकल केसेस आ रहे हैं? ये आ रहे हैं सर। आपका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? सर ये G91 में सर। हाँ? G91। ये क्या घर है? नहीं सर, ये सिविल डिफेंस बिल्डिंग है सर, अच्छा, उसके अंदर है। नहीं तो आपके पास फॉर इंस्टेंस दिसंबर 2023 में कितनी केसेस आए हैं फ्रेश? सर ये बताने लगा 46 केस आए हैं सर। फ्रेश? जी फ्रेश। अच्छा, इनका क्या बना? सर ये प्रोसेस शुरू कर दिए ना इसका हमारा। उससे पहले हम JIT बनवाते हैं, उसके बाद JIT क्या चीज है? सर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। क्या चीज है बताएं, कौन होता है उसका मेंबर? उसमें SSP इन्वेस्टिगेशन होते हैं और साथ में रैप होते हैं IB के, ISI के, MI के और होम डिपार्टमेंट के। इसके 5-6 लोग। ये आप बताएं, मिस जंजू आप गई इस कमीशन के सामने? यस माय लॉर्ड, जब ये बना था 2011 आप में। इससे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? मुतमईन नहीं है हम लोग। हम लोग से मुराद हम और तमाम जो विक्टिम्स हैं जो वहाँ पे पेश हुए आप भी केस में हैं? इसमें आपके साथ इनाम साहब जो खड़े, आप भी इस केस में हैं? I'm assisting, madam. I'm working with her, sir. ये आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? Not at all, sir. हाँ? Not at all. कोई मुतमईन नहीं है, sir. Dispose of किए हैं। Honorable ने बड़ा नहीं, एक सेकेंड, तो लंबी बात नहीं करें, आप मुतमईन हैं या नहीं है? dispose of जो है इसमें हाँ, आप सिर्फ हाँ या ना बता not दें। satisfied, sir. Not at एक all. सेकेंड, एक सेकेंड। इत्तेदाद साहब, आप मुतमईन हैं इस कमीशन से? नहीं नहीं, बस सिर्फ पूछ रहे मुतमईन है या नहीं मुतमईन है? नहीं नहीं, मुतमईन है या नहीं मुतमईन? हद तक है। नहीं सवाल सिर्फ मुतमईन, ये। बस बस ओके। अच्छा, एक रजिस्टर ये यहाँ जो आज जो केसेस हैं, कोई मुतमईन है कमीशन से या नहीं है? नहीं है सर। नहीं, कोई मुतमईन नहीं। अच्छा, ये 2023 तक आपने 10,088 केस लिखे हैं। ये कब से शुरू हुए हैं 10,088? सर ये टोटल हो गए जो हमारे पास। मेरा सवाल सुने। 2011 से सर। सुने, आप देखिए, रजिस्ट्रार हैं, आपके पास माय लॉर्ड जो पूछ आप रहे हैं ना, रजिस्ट्रार हैं, सर, आपके पास कि- फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए। देखिए एक नंबर से हमें दिलचस्पी नहीं है, हमें नाम से है। ठीक है। ठीक है, फला शख्स मिसिंग हुआ इस तारीख को, आपके पास रिपोर्ट आई इस तारीख को, ठीक है, वो उस वक्त का जमाना मतलब ईयर हमें पता चलेगा ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उधर जाती है। तो ऐसा डेटा आपके पास है? ऐसी है, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया सारा। सुने ना, आपने ये कॉस्मेटिक वैल्यू ऐसी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ केसेस अप टू दिसंबर 2023 10,088। ये 10,000 कब से शुरू हुए हैं ये केसेस? ये अब इनके हस्बैंड तो सर ये 2005 से पहले मैं अर्ज करता हूँ, ये पहले एक कमीशन एक बनाया था सुप्रीम आपको कोर्ट ने। ईयरली बनानी चाहिए ना। जो पिछला डिस्पोज हो गया, बैकलॉग पूरा लेके चल रहा है, अब ये नहीं पता 10,000 केस कब से पेंडिंग है आपके नहीं पास? सर, इस पेंडिंग वो लिखे हुए नीचे, जो पेंडिंग इस वक्त है वो भी नीचे लिखे अच्छा, हुए। ये तीनों का कमीशन है, मोहम्मद शरीफ विर्क, अमानुल्लाह यासीन जई साहब और जावेद इकबाल साहब। और जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और कौन? जस्टिस ज़िया परवेज साहब कराची में है। और डेली असेंबल होते हैं, कैसे आते हैं कराची से? नहीं, वो कराची में करते हैं, उसी के केसेस वहाँ करते हैं। अलग अलग करता है, अलग अलग बलूचिस्तान के जो है वो कोयटा में होते अच्छा, हैं। और रिकॉर्ड रखते हैं आप? खैबर पख्तूनख्वा के कौन है? वो इस्लामाबाद से ही जाते हैं, हमारे जय साहब जाते हैं या शरीफ विर्क साहब जाते हैं। और पंजाब से? पंजाब में भी, पंजाब और ये फ्रंटियर। यही मेंबर हैं जी फिर? जी 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 5 लोग हैं, हाँ जी। 4 लोग हैं? जी हाँ, हाँ, 4 हो गए जी, बिल्कुल। आर दे पेड और दिस वॉलंटरी वर्क? ये सब पे होता है सर, हाँ? पे करते हैं सर। अब जो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हैं, उनको हाई कोर्ट का पैकेज जो होता है वो मिलते हैं। अच्छा, तो वो तो उनको पेंशन मिलती है वैसे ही। पेंशन तो लेते हैं सर। नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर है उनको सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह है, जो हाई कोर्ट से रिटायर है उनको हाई कोर्ट की तनख्वाह है, यही है ना? उनको क्यों मिलती है तनख्वाह? के अलावा हाँ? क्यों क्या जवाब? नहीं मतलब समझ नहीं आ रही बात। हाँ, जी ये अटॉर्नी जनरल साहब से। उनका पैकेज तो वही होता है ना, जो वो लास्ट अटॉर्नी जनरल सर्विस कर रहे होते हैं। अटॉर्नी जनरल
Do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. थोड़ा सा जोर से बोलिए. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges, it is whether quite post-retirement can they, if they are required to do any work. वो आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस. कोई भी रिटायर होता है, जब नई जगह जाता है, उसको वही पैसे मिलते हैं. हाई कोर्ट से है तो हाई कोर्ट की है, एमलमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है. दिस इज एन एडिशन टू द पेंशन. Right. So I was not No, aware, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, that's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But it's a government assignment, then you're not paid for that. That is part. वो कौन सा ऑर्डर है? ये तो कह रहे हैं इनका बड़ा बजट भी है. ये कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आता है? इंटीरियर सर. नहीं, इनसे पूछ रहे हैं आप कौन सी मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं? वैसे बजट हमारा थ्रू इंटीरियर आता है, अदरवाइज कमिश्नर इंडिपेंडेंट ही है. इंडिपेंडेंट अलग बात होती है, और गवर्नमेंट में किसी जगह तो आपको बजट जाता होगा ना, इंटीरियर में, फाइनेंस में, किस में, ह्यूमन राइट्स में, लॉ में, किधर ऑफ इंटीरियर आता है बजट हमारा. अभी हमारी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन इस वक्त किया है कैबिनेट ने. आपको कुछ पता है इसके मुतालिक? खोसर साहब आप कुछ जिक्र कर रहे थे अभी. विजिट भी किया है, वो आपकी इस प्रेमिसेस से बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी. बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा. कहाँ लिखा है आपने? आपको पता है? पिटीशन में, मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे. अच्छा. ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है. अच्छा. मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. अच्छा. वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा. आज तक जो कुछ इन्होंने एक्सपेंडिचर हुआ है, मीटिंग वगैरह जो करते हैं, बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है, और उनकी आउटपुट क्या है. स्टार बनाया हुआ. ये कौन से केसेस जो क्लोज हो रही है रजिस्ट्रार साहब? क्या आपको ये अपॉइंट कैसे हुआ? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी जी, my lord, it was appointed under Commission of Inquiry Act 1956 in 2011. Never. जी, वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम. वो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार, आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है. खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी. वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? My lord, this is SRO 149 था 134 of which file? ये है. My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है. कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का. दे दो दोनों. 161 देना, मुझे देना जरा. उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा, ये गजट नोटिफिकेशन है. मेरी जो जरा पढ़ ले आप. कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन. My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a commission of inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following, namely, Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Baluchistan High Court, Mr. Muhammad Sharif, IGP, retired, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. 2. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये. The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely. ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन. प्लस कर दिया है. To trace whereabouts 30 into. वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे. अच्छा, फिर इसका वो किधर है पैसे?
My lord, it's, I mean, there's only this Commission will have it its says that independent Huh? secretariat with auxiliary staff. That's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए. I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. ये 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, वो बढ़ा देते हैं. जी. Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam, जो कि 136 persons My lord, and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते होते वो that is now कब बना है 2011 में. नहीं, tell us. आप हमें बताएं, जरा ज़बानी बताएं. Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I've attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that contains really most of the answers to this issue. Which? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? G. Retired here, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath. Acha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप index ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि individual cases के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या recommendation हुई, उस पे क्या compensation award हुई, वो इस report में दी गई है. I would not attach the entire report, sir, with the annexures, but I'll place that before your lordships. Or then it was substituted by Justice Javed Iqbal. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where? Page? Sir, if your lordships may kindly see. ये report confidential थी, ये public कब हुई है? Sir, ये फिर public तो नहीं हुई, लेकिन ये copies have been circulating, sir. खुद अपनी report में लिख रहे हैं कि confidential report है. The copies, sir, page अगर आप 38 देख लीजिए kindly. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें. ये तो जो इनकी फाइनल प्रोसीजर रिकमेंडेशंस इनके हैं पैराग्राफ 57 पेज 40 के ऊपर, वो तो इन इफेक्ट करते ही है ना. जेआईटी तो बना दी इन लोगों ने हर चीज में. द मेन प्रॉब्लम कमीशन का ये है, और ये सेक्रेटरी साहब इसको रिकन्फर्म करेंगे, is that this of course is not the first time your lordships have taken notice on this issue. Supreme Court has been active on this issue since 2006. The last order which was passed is very important, sir. Page 61 of this paper book. वो critical order, and sir, that is the first suggestion I would give in terms of a resolution to this problem. Page 61. A special implementation bench was created by this court regarding page 61. Relevant पढ़ें? जी. Sir, page 61. On the last date of hearing, 26/9/2018, this matter was fixed before a 3-member bench of this court, headed by the Honorable Chief Justice of Pakistan. The operative part of the order passed on the said date is reproduced herein below. After hearing the applicants, we deem it appropriate
appropriate that a special bench be constituted to supervise the proceedings before the Commission, particularly with respect to the cases in which production orders. Now, मैं ये explain करूँगा थोड़ा सा बाद में sir. Production orders were issued by the Commission, but the same have not been complied with, and monthly reports shall be submitted by the Commission to such special bench for perusal of the honourable members. It also directed that all the matters pertaining to missing persons which come to the Supreme Court be referred to the Commission for adjudication and disposal. This case is to be fixed before the special bench to be constituted by the Chief Justice of Pakistan. It is very much clear from the above order of this court that a direction was issued to the office of this court that all matters / cases relating to missing persons which come to this court shall be referred to the Commission of Inquiry on Enforced Disappearance for adjudication and disposal. Therefore, the office is directed to comply with the direction of this court given in the order dated 26/9/2018 immediately. The Registrar of the Commission on Enforced Disappearance present in court has substituted a report through CMA number so and so, which is placed on record. Now, this is the critical operative part. However, the Commission on Inquiry on Enforced Disappearance is directed to submit a detailed report regarding the cases so far dealt with by the Commission, i.e. the status of each case, and if the case / cases have been disposed of, details thereof. That's the first direction. The second direction, the Commission shall also submit a separate report regarding the cases where production orders were issued by the Commission, and so far those cases have not been complied with. The requisite report shall reach this office for approval in chambers within 1 month positively. Sir, this notion of production orders under the regulations is critical. When the Commission, after an initial inquiry... I don't understand. If you don't know where a person is, how can you issue production order? Yes. What the Commission does is that it does an investigation, and if it comes to a prima facie opinion on the basis of the evidence that this is a case of enforced disappearance. Now, when the term enforced disappearance is used, my lord, it by definition means that the abduction is by state officials. It can't be a private kidnapping. So when it only issues a production order when it comes to the conclusion that prima facie this is a case of enforced disappearance. Now the Commission... Without knowing the whereabouts, somebody has to say that the custody is with us. Oral evidence of that. Now, the reason why the Supreme Court passed this order is, and this will be confirmed by the registrar, is 645 production orders have been issued. 2018 का ऑर्डर आपने पढ़ा जी, अब 2024 में इसके बाद कुछ हुआ होगा ना? इसके बाद इस केस में जहां तक मुझे मालूम है कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 750 कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 2022 में स्टेटमेंट ये दिया था कि 645 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैव बीन इशूड टू द रेलेवेंट एजेंसीज, ओनली 51 हैव बीन कंप्लाइड विद. इफ योर लॉर्डशिप में काइंडली सी एक प्रोडक्शन ऑर्डर जरा पेज 66 पे देख लीजिए. That is the critical thing, that's the problem with the Commission, is that their orders are not complied with. Page 66. इन्होंने तो ये तो पूरे क्लोज ही कर दिए केस. ये सर वो भी मैं आपको दिखाता हूं. इनको मार करके दिया है मगर इन्होंने जवाब नहीं दिया. नीचे ये लिखा हुआ है क्लोज ड्यू टू नॉट बीइंग केसेस ऑफ ये पूरी रिपोर्ट नहीं है. इनकम्प्लीट एड्रेस, विड्रॉल बाय कंप्लेंट्स, नॉन प्रोसिक्यूशन. ये पूरी नहीं है. ये जो स्टैटिक बना हुआ है, मैंने इनसे पूछवाया, कह रहे सारे केस ही बंद हो गए. तो ये पूरे 10,000 केस बंद हो गए. सर पूरी नहीं है, मैं भी आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं. मैंने पूरी रिपोर्ट पेज 66 अगर देख लीजिए, पढ़ लिया. Since these orders, there are 645. Amna has just informed me that there are now 700. Yet Commission itself has come to the prima facie opinion that this is a case where the relevant officials of the state are involved, and those orders have not been complied with. और हुआ ये उसमें से तो एक सेकंड, one step at a time. जी. Attorney General, मैं आपको रिपोर्ट पूरी देख लूं. have a look at the production order. जी सर.
सैंपल के तौर पे मैंने रखा है। My lord. हाँ तो वो तो वही कह रही थी, वो तो यही बात कह रही है। ये सही बात है। तो इसका क्या हुआ फिर? सस्पेक्ट है ना, कुछ सस्पेक्ट कर रही है। If these production orders, it's a government constituted commission, and the government constituted commission has ordered something, then what happens now? He's saying that these production orders are not being complied with. I think under the Commission of Inquiry Act 2017, the Commission has the powers of contempt. Powers of Judge of Supreme Court, sir. And if नहीं, वो तो want to ठीक see है if ना, those powers were ever object is exercised. not to send people to jail. No, but The what I'm object saying is is, to, if the people are illegally detained, to set them Right. free. जी. वो तो बात की बातें हैं. well, I'm just आप punishment में हम नहीं, मसले मैं punishment मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. that's right, sir. अगर हम punishment में फौरन चले गए तो मसले का हल नहीं होगा. That's right, sir. That's right. No, I'm just with regards to the production orders. I mean, I'd have to check with the Commission what happened. I mean, check this is कर लें. 2020, नहीं, 10 December 2020. So, देखें, what we can, I'm just thinking now aloud, subject to what everyone says, that let the government, because production, you are directed, the government is directed in one form or the other, that you have to give us some response to a production order. That's right. Yes, no, whatever, no, we want to keep him, he's being tried in a court of law. I don't know, whatever the reason is. But it has to solicit a response, some response. Of course, this is not the responsibility of this government, because this, for instance, this production order is dated 2020. Yeah. ठीक है, 10th November 2020. So we don't put the burden on your heads, but at least we want to know what you have to offer. So we will certainly give you time. And ये सारे production orders, if we tell the commission to provide them to you in a tabulated form, name, parentage, address, whatever, so you can easily traceable, and submit a comprehensive response report, unless you have some better solution. I think that's कमीशन के सामने दे अपने orders, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, I think what my Lord the Chief तो Justice. उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर दी 2017 पेज 29 इसमें कौन सा? ये मत के बारे पेज में 20, हाँ मिल गया. भी उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे ना, आपने प्रपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है पैराग्राफ ग्राउंड एफ है, ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and articles 187 of the constitution, order 32, rule 1 and 2, read with order 36 of the Supreme Court rules 1980, coupled with the principles of civil procedure code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present
set up, let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हो, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं उसकी वजह यह है ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली रहेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर विद रिस्पेक्ट। But therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल के tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका एतराज यही होगा कि जी क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है? तो वो नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये जरूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियां आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप केसेस ना चलाओ बस यही काम करो। सर इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, आपने अपॉइंट किया था उनको? जी सर, मैं और क्या कहें आपको? तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया, तो अब आपकी हुकूमत है, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन ले जो स्ट्रक्चर है जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार, सिविल सोसाइटी, आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीजें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहता है यार ये क्या मुझे एक काम करना है मुफ्त में, ठीक है? तो वो भी देखें हम, ये बर्डन हम प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में। कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें इत्तेज़ाज़ साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordships can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है, देखिए वो 2 किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव
बंदे नॉमिनेट करने का है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, the Pakistan Bar Council, presidents of the 4 provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे. The mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है. तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शन कंपटीशन में हो जाएगा. वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं. अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना, वो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना. जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन. आप ये दो देखें. Director General Sorry to interrupt. ISI. एक second. Sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. जो scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है. We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है. PFUJ को भी मैंने इसमें PFUJ and 2 senior officers, senior most officers of the Inter-Services Intelligence and the IB. आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं अगर वो नोटिफाई करें. अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do. Come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. सलाउद्दीन होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए. मंडे को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. ट्यूसडे को क्या? बेंच कंटिन्यू कर दी तो ट्यूसडे को कर लेंगे. उससे भी नहीं पता हम चाहते हैं. ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? छोड़ना चाहते हो? कमाल. अच्छा, आप ऐसा करें, come up with some practical suggestions. Talk to Mr. Faisal Siddiqui. Take these production orders. बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं. लिखें. सॉरी सलाउद्दीन साहब, आप इस केस में? Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब, हमने विड्रॉ कर ली. अच्छा, ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसने क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी. नहीं sir, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Zandani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर. वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा. The report was furnished and it is on record. इसमें लिखिए, वो ऑफिस कौन है? स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं. इत्तेजाज एहसन फेडरल आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124. सबसे पहला केस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं. ये क्या कह रहे हैं? विड्रॉ करना चाह रहे हैं. अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की. इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है. ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ जाती मसले हैं. लेकिन हम जाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में.